Okay, welcome to the Unit 5.2 of this week 5 lecture. In this unit, we will be having an overview of the Octave Online. As I discussed in the previous unit, that we will be using Octave Online in place of MATLAB for our own online classes. It will be easier for you to work on Octave Online because it's a free source. You can access it through your browser. You just simply have to follow these basic steps that we are going to see in this particular unit's video. It's Octave Online. You'll just write Octave Online and search it on Google. There's a link, octave-online.net. So this is your Octave Online. The script is same as the MATLAB. The script that we use on the MATLAB can be run over here as well. You can copy the script from any MATLAB code and run it on Octave Online. There may be some changes at the advanced level, but the programs that we are going to create in this particular course, they are very basic codes. They are not very complex, or they will not be using any advanced tools, so they can easily be programmed on Octave Online. This is your command window. You can write anything over here. You are basically with the you are coming from a programming background. You have previously done computer programming course, and if you are a computer science and software engineering student, you have also gone through the object oriented programming course. Okay, some basic things that this is the command window. You can write anything over here. Let's say if a is equal to 10, I am assigning the value of 10 to a is equal to 10. You can see in this left side as well. There are two variables, a and ans are assigned. अगर अब मैं यहाँ a लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो a में 10 ऑलरेडी सेव किया था, तो अब a में 10 सेव है. ठीक है जी. आप अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट क्योंकि आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाने होंगे, तो आपको जो एक स्क्रिप्ट के लिए एक अलग से फ़ाइल, जिसे एम फाइल कहा जाता है, वो यहाँ क्रिएट करनी होगी. उसके लिए आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा. तो लॉगिन कर लें. यहाँ मेन्यू में आएंगे तो साइन इन विद गूगल कर लें. अपने किसी भी जीमेल के अकाउंट से इसे आप एक्सेस कर सकते हैं. मैंने साइन इन विद गूगल कर लिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी जीमेल लॉगिन था यहाँ पे, तो साइन इन विद गूगल हो गया. अगर आप ने लॉगिन करना है तो आपसे आपका जीमेल का यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा और लॉगिन हो जाएगा. ठीक है जी. Okay, now you can see there are two windows now. This is the same command prompt. You can do many things over here, as it's written over here. Setup sharing, हम sharing कर दें तो आप साथ collaboratively code भी कर सकते हैं. There are so many options, you can explore them as well. It's not required for you, but you can explore them later on. So what do you have to do? As I said earlier, you can code over here as well. This is your command window, and if you have to create a separate file for each of your code, then you'll have to create a script file. I just clicked over here, the plus symbol, create empty file. I'll create an empty file now. So there are some things that you need to follow when you're giving name to your file. Just make sure there is no space in between the alphabets or in between your words, or you are not using any special character. Only underscore can be accepted, or you can only use underscore. Except underscore, you cannot use any special character while naming your file. it, the extension of this file is .m. So let's say I'm going to create an m file for the bisection method. Bisection
bisection MET. I am not giving any space, I am not writing anything in between, any special character in between. MET dot M extension डाली तो as you can see over here, bisection met.m has created. I will click on it. There is a new file, a script file, which you can see over here. Now you have to code, you have to write your program in this script file. You have to write your program in this script file, then you will run your code using this run script tab over here, and it will be the results will be displayed on your command prompt, command window. Okay, let's say it's written this hello world. You'll save it, you will run it. You can see in the right, hello world has printed as an output, and it's mentioning the source of this output as well, bisection met.m, that you have executed, you have run the file bisection met.m, and the output of this particular file, the code that is written on this particular file is hello world. Okay, so we'll write our code over here, and we can observe our results in this right side of the window. There are some basic thing that you need to know. The first one was the naming convention. You don't have to use any space or any special character while naming a file, so please make sure of that. Let's say I am giving Asim space aftab .m. It's not creating the file. I am clicking on OK, but it's not creating the file. When I remove this space, it will create the file immediately. Now this this follows the same structure as MATLAB. Even in MATLAB, जब आप कोई फाइल बनाएंगे तो MATLAB में भी जब आप वो फाइल बनाएंगे तो उसके नाम में आपको यही नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना होता है कि नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए. ठीक है जी, ये अजीम आफ्ताब डॉट एम यहाँ क्रिएट हो गई है. Okay, so I have created these files earlier, so that's why they are being displayed in this current folder or current directory as well. You can also drop your files here to upload. Let's say you have some .m files that is placed in some other folder. You can drag and drop over here as well. Okay, then there are a few things, few general things that you'll be using on your each and every of your code. Let's say some common things like CLC. CLC clears the screen. Like let's say A is equal to 10, B is equal to 15, C is equal to 18. Let's say I have declared these three variables. A, I have assigned the value of A to 10, B to 15 to B, 18 to C. This is your variable that you have used so far, A, B, C, and the answer. If I'll write A plus B, you can see A was 10, B was 15. I wrote A plus B. The answer is 25. Which means they added these two, the values of these two variables A and B. If I want to multiply B into C, I'll simply write B multiplied by C. B multiplied by C means 15 multiplied by 18 will be 270. So these are some simple calculations. Now I want to clear this screen, so I'll write CLC. CLC will clear the screen. There is another thing, clear all, clear space all, clear all. As you can see, you have assigned some numeric values to these variables A, B, and C. If I write clear all and enter it, it will clear all the variables that you have assigned earlier. There is another thing that we usually write on the start of our code. It is close all. So basically, whenever you're writing any code, let's say we will be writing the code of the bisection method, the first three lines we will be writing will be CLC, enter,
clear all, enter, close all. Generally we write uh, these three lines on start of each and every code, because when you are executing your this script file, you have already been running some files earlier as well. So there might be some variables that have been assigned to some other values, and you are using the same variables in this code as well. So generally you write these three lines to clear the screen, to clear all the variables. Close all the graphs और प्लॉट्स दैट विल बी डिस्प्लेइंग. लेट्स से आपने किसी प्रोग्राम में कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट किया था, कोई फिगर आपने प्लॉट की थी और वो बैकग्राउंड में खुली हुई हैं या आपके पास मिनिमाइज हुई हुई हैं, तो ये क्लोज ऑल उन सबको क्लोज कर देगा. ठीक है जी. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेव ऑनलाइन. you'll be writing your code over here. Let's say if I want to assign a matrix A is equal to, now how you give input matrix इसमें कैसा input दिया जाएगा. A is equal to the square bracket 2 3 4. when you are writing with a space means that it is shifting towards the next column. 2 first row है ये 2, 3 is first row second column, 4 is first row third column. अगर मैं इसके साथ सेमी कॉलन लगा देता हूँ और उसके बाद अब कुछ लिखता हूँ, लेट्स से 2 स्पेस 5 स्पेस 7 और फिर सेमी कॉलन लगा देता हूँ 1 स्पेस 0 स्पेस 9 और इसे क्लोज कर देता हूँ, तो सिंपली एक ये 3x3 का मैट्रिक्स जनरेट कर देगा. ठीक है जी. अगर मैं इसे रन करके सेव करके रन करता हूँ, तो यू कैन सी ओवर हियर एज वेल कि एक मैट्रिक्स जनरेट कर दिया. 2 3 4 इसकी पहली रो है, द सेकेंड रो इज़ 2 5 7 एंड द थर्ड रो इज़ 1 0 9. तो जब आप कोई भी इसमें चेंजेस करें तो सबसे पहले यहाँ से सेव करना है और सेव करके रन करना है. तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं कि हम इस पर प्रोग्राम अपने जो मेथड हैं उन्हें कैसे कोड करेंगे. एंड यू विल सी इट इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली दैन द लैंग्वेजेस दैट यू हैव बीन यूजिंग सो फार. देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर बिल्ट इन इट, लाइक लेट्स से आप अगर सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आगे इसके अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ, इसके आगे सेमी कॉलन लगा के मैं इसे रन करता हूँ, रन हो गया, कोई रिज़ल्ट पे कोई डिस्प्ले नहीं कर रहा. तो सिंपली सेमी कॉलन लगाने ना लगाने से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. अगर आप किसी चीज़ के आगे सेमी कॉलन लगा देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट तो कर देगा रन करने पे, लेकिन आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं करेगा. लेट्स से इसके साथ लिखता हूँ b इज़ इक्वल टू 10. अब मैं इसे अगर सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो ये सिर्फ b इज़ इक्वल टू 10 डिस्प्ले कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसके आगे सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ. ए के आगे हमने सेमी कॉलन लगा दिया था तो एग्जीक्यूट किया है उसने, सिर्फ आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं किया. अब देखें मैं इसके आगे सेमी कॉलन हटा देता हूँ और इसके आगे लगा देता हूँ, तो अब ये एक एग्जीक्यूट अगेन दोनों को करेगा, लेकिन आउटपुट पे डिस्प्ले, सेव नहीं किया था, सेव किया, रन किया, अब आउटपुट पे डिस्प्ले सिर्फ ए को कर रहा है. ठीक है जी. तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स. अब हम देखते हैं कि अपने नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं कि हमें कोड किस तरह से करना है.